Good morning, everyone. Just like every Sunday, again, we are online and we are for learning today. So, basically, what I believe, if we are not learning and we stop learning, so we also stop earning. जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो फिर सारी चीजें सारी ग्रोथ या अर्निंग मनी एवरीथिंग स्टार्ट गेटिंग basically degraded, and ultimately we start uh, uh, feeling that we are not doing well in our business. If we talk about the business, because this is a business workshop, so we'll talk about the business only. So basically, what happened, we must learn, we must implement, but at the same time, actually overdose of anything also becomes sometimes devastating for us. So, like overdose of information is also are very, very devastating for us. So basically, we must take information, but at the same time, we need to filter what is required for us. And I believe everybody must have a mentor or coach for your business so that uh, you can get filtered information, and you can also get advice. You can also get some recommendations. So what happened, mentor filter the right information for you and help you to implement in your life, in your business, right? I believe it's clear now for all of us. So let's start. So I'm sharing my screen. Yeah. So now this is a business growth workshop, and let's start. And I think before watching this workshop or before attending this workshop, please keep pen and paper with you and keep writing, because only listening and watching cannot help for us until unless we go back to our business and implement something in our life, in our business. So basically, this workshop is a foundation of 100 crore roadmap to success of your business. So basically, if we are working, we are implementing something. So you may be thinking, say, my turnover is only 50 lakh, my turnover is only 2 crore, my turnover is 5 crore, but it's still why we are talking about 100 crore. So trust me, this will work, and by end of the workshop, you will be also clear whether it is useful for or not, because we've implemented this framework to the businesses who are just starting, and really they are multiplying themselves 10x 20x also, because they are running towards 100 cr. Got it? Now let's move ahead. So this workshop is not only for the business, but I believe uh, your happiness and your success also part of your business. And this foundation, whatever we are discussing today in this workshop, that may be the foundation stone of business success and happiness for you. So let me introduce myself. So I'm KP Singh, having 20 plus experience of professional experience in the business and the other way. And I also struggled just like you, just for 5 years of my starting business. So basically, I started my own business in 2012. For that moment, I realized that I'm missing something, and something is missing. That's why, despite putting a lot of efforts, hard work, money, but still the growth needle is not moving ahead. For this thing, I started developing, I started finding out what is the root cause of this one. Then I came up with a roadmap to success. This roadmap to success, which is also called the RTS growth framework, has been a turning point for me
And now it has become a turning point of 200 plus businesses and business owners. So just like others, because I believe the setting a goal is a first step of laying down the foundation of our growth. Without goal, यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य का जीवन, बिना उद्देश्य का बिजनेस, आई थिंक ये हमें किसी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता। जब हमारा कोई उद्देश्य बन जाता है तो हमारे पास एनर्जी भी आ जाती है, हमारे पास रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं। So with this belief, I've also set the few years back my goal for helping 1,000 MSMEs to reach 100 crore of turnover by 2024 and 2040, sorry, and the enabling out of 1,000, 100 MSMEs to cross 500 crore of turnover in next 10 to 15 years, as well as building a community of 10,000 businesses driving transformative growth. So this is my goal, and I'm working day and night and 24 hours for this mission, for this goal, and for this my vision. And the people who are working with me, they become a part of my vision, my mission, and they also able to achieve their vision. So basically, this is a roadmap to success workshop. As I explained, I mentioned, I have trained 250 business owners to implement RTS growth framework. After that, actually, this has to be the success framework for each and every businesses. So basically, what is this workshop? This workshop helps to build, right, the success of a business. Now, how we can ensure the success of business? So we have basically designed the system to put few things into action in 5 phases, correct? So what are the 5 phases we need to understand? So these 5 phases help you from today, where you are, to 100 crore of building businesses. This gives direction and execution for the growth, whatever you have set your goal. So basically, I need some commitment. If you're watching this video, if you're attending this workshop, so actually without commitment, nothing is possible. So this is, I need basically the commitment from you, at least note keeping notes with you, and please writing down whatever points are useful for you. And I believe if you're still not having, because most of the people are tech savvy now, they don't have notepad with them. So please taking a screenshot, and you can also prepare a brief note for that, so that you can make this workshop actionable, because you are investing your time, I believe. So if you're not noting it down, and if we are not taking back to your business something from this, so what happen? This will become wasting of time, or rather investing of time. So I believe, and I highly recommend, and I need this commitment from you. Please, if you're watching this video, if you're attending this workshop, so please do not basically uh, do not waste your time, and keep writing and noting down the important points which are relevant for your business, right? Right. So now what you can do it, you have to think about these 5 phases. These are 5 phases, and these 5 phases have many people to 10x, 20x, and because this been 3 years or less to implement this one.
because earlier actually we used to coach people one to one, but now we have built recently this framework, and now people are really able to do this thing. So these are 5 phases: build CEO mindset, master projection planning, master strategies, SOP to scale, build control system, and task delegation. These are 5 systems for the growth, which enable your business, your company to achieve 2x, 3x, 5x, 10x, 20x growth every year. And like that, you will achieve very soon in a certain period of time as per your goal towards 200 CR of business, right? Today, actually, we are focusing much more on delegation of task. So basically, in each and every web shop, we always focus on each and every 5 phases of the growth workshop. But today, I want to focus on only the delegation of task and authority, right? So this is a workshop for this growth authority, and we need to understand how we can implement in our system, right? So I quickly wrap the rest of the points, and I elaborate the task management and how you can do the task delegation for this thing, right? So builds your mindset. So what I believe, think like an operator. तो सोच से सब कुछ होता है। यदि आप अपनी सोच बदल लेंगे, यदि आप राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, your thought process are aligned with your goal, your thought process are aligned with your strategies, so definitely nobody can stop you to achieve 100 CR of turnover. So what the CEO does for CEO, whenever you are developing a CEO mindset, so what happen? This will focus on opportunities versus problems. So basically, focus on opportunities. Most of the people who are not growth oriented and they are not having a CEO mindset. So what happen? They keep focusing on problems rather than opportunities, and they miss a lot of opportunities in their life. Similarly, the next point is set goal and keep tracking with the actual. So you have to set a goal, you have to set up, you have to build a projection, and then you have to have a system, ERP, CRM, something kind of thing, which can give you the actual data, actual performance of business, and you keep tracking whatever you have uh, projected, right, in the beginning of this execution of this workshop. And the next thing is that you have to know yourself, what's your strength, what's your weakness, and you have to align your strength with your goal. Next is develop power of processing issues. So there's no system in this world which has uh, not have problems, issues, and challenges. But you must know, because most of people getting affected and they got impacted, and after that they deviate themselves from their strategy and planning and goal because of those challenges. So you know how to process challenges. So once your goal is clear, your vision is clear, so definitely you will be able to do this to one also. Become 1 minute manager. This is much more important. So I always explain in a different session to become a 1 minute manager, right? Now you will say कि ये तो समय पता है और इनसे कुछ नहीं होता है, तो इस चीज को अवॉइड करिए. When you are watching this, when you are connecting this, so please avoid this thing and try to learn. आपको सब पता है, मुझे भी ये चीज पता है, बट आप उनमें से कितना आप एक्चुअल बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो दैट्स अ पॉइंट. एंड टुडे वी आर कनेक्टेड हियर एंड वी आर वाचिंग हियर. So basically, problem versus opportunities already explained with you. So I'm not going in detail. If you are in the journey of building a CEO mindset, or basically changing yourself, aligning your thoughts from operator to a smart CEO. So you need to be focused on opportunities rather problems.
So these are some problems actually which have been reported by so-called CEOs or I would say business operators or business managers. You will solve one and another will start the popping up. What happened? यदि आप यदि आप प्रॉब्लम सेंट्रिक हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, तो आप एक प्रॉब्लम खत्म करेंगे, एक चैलेंज अपना खत्म कर देंगे और दूसरा आपका वो खत्म नहीं होगा, दूसरा क्रिएट हो जाएगा और हैपनिंग this will keep happening throughout your life, throughout your business journey. So whenever you're starting a business or you are in the business journey, you should accept this one and you should basically change yourself in this way to focus on opportunities, challenges, not only this uh, problems. You will solve one and another will start popping up. It means that now you must have understood this one. Please start focusing on opportunities, not on a problem. These are a few opportunities you may identify because some people are confused what are the problems, what are the opportunities. So in my last slide, I have already explained these are the problems. These are the problems, and you need to basically attend. You should basically focus on problems, not opportunities. Okay. Now we need to understand how you can this one. Yes. So basically, we should not focus on these problems, right? This kind of problems. So I have mentioned here to just help you to identify what are the problems and what are the opportunities. So we need to differentiate. Most of the people not able to differentiate whether I'm focusing on problems or I'm focusing on opportunities. We must focus on opportunities, right? So what are the opportunities, kind of opportunities? So basically these are problems. So we must basically uh, avoid this thing, avoid these problems, focusing on these problems. So these are a problem. So we should not focus on this, right? We should not focus on this. Now, what we can focus? We should focus on opportunities, right? So, what are the opportunities? Basically, we need to understand, correct? So, these opportunities can help you. These are basically opportunities. We need to focus on this, right? How we can focus? Let me erase this one. Let me okay, undo. So these are opportunities, right? These are opportunities which we must focus on this. These are opportunities. So the basic opportunity is positive cash flow. So this positive cash flow can help you to revamp your business even you are in a big loss. So this will help you. So basically this is very important for second, third generation business owners who are working day and night, but still they are earning a lot of revenues, but still they are sitting in a negative cash flow. So why the negative cash flows? Because there is a lot of leakage in the system. जब सिस्टम में लीकेजेस होंगे तो डेफिनेटली कैश फ्लो आपका मेंटेन नहीं होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो आपका मेंटेन नहीं होगा। लेकिन बहुत तरह के हो सकते हैं, करेक्ट, हम बाद में बात करेंगे। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में हम फोकस करना है, प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना है, राइट। अपसेल करो, वर्क फ्लो डिफाइन करो, टीम को ट्रेन करो। दीज आर अपॉर्चुनिटीज। और यदि मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करिए और वो व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग, try to find out and start practicing which is the most impactful in a positive way, right, in your business. So these are opportunities basically. Now which one is power of one? So this is a positive cash flow. So there's a many opportunities, but still we should focus on cash flow, positive cash flow. अब क्या है कि ये जो अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम अपना प्रॉब्लम सेंट्रिक है, आपने देखा कि आप
तो आप एक छोटा सा अप्रोच चेंज करते हैं, माइंडसेट शिफ्ट करते हैं, तो आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है। और उससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी सारे जो वे ऑफ वर्किंग है, जो वे ऑफ बेसिकली डूइंग डे टू डे टास्क, वे ऑफ प्रोजेक्टिंग योर बिजनेस, वे ऑफ लीडिंग योर टीम, so this always becomes basically imperative or positive for your business. तो आप अब यहाँ दे सकते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि यदि हमारे पास ये नहीं है, तो आपको एहसास हो गया होगा कि यहाँ पे अभी तक जो हमने समझा और सीखा, यहाँ तक ये है कि आप खुद अकाउंटेबल हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो सब कुछ चेंज हो रहा है। इट मीन्स दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू। आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम को, टीम को बहुत सारी चीजों पर ब्लेम करते हैं। बजट, फंड, जो हमारा पेमेंट रिकवरी होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो रियल लाइफ में है, रियल बिजनेस में है। बट द सेम टाइम अल्टीमेटली व्हेन यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, सो लॉट ऑफ थिंग्स गेट चेंज। व्हाई मी? आप क्यों अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? शायद इसका आपको आंसर मिल गया होगा। अब यदि हम बहुत ही और ज्यादा डीपली प्रैक्टिकली हम बात करें, तो वो इसलिए होता है। ऐसा क्यों होता है बेसिकली? क्यों? क्योंकि आप अभी ऑपरेशन मैनेजर की तरह काम करो अपने बिजनेस में। यू आर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस। एम आई राइट और नॉट? जस्ट राइट इन अ कमेंट, आई एम राइट और नॉट? सो बेसिकली आप यदि सब जनरली एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सभी लोग ये पाएंगे अपने बिजनेस में। आप रियलाइज करिएगा, या आप कुछ अपने पुराने डेज में जाओ वापस और देखो कि आप क्या अपने बिजनेस में ऑपरेशन मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है डे टू डे एक्टिविटी को ट्रैक करना, पुश करना। जैसे डिलीवरी जाना है किसी को, पैकिंग करना है, इनवाइसिंग करना है, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस मैनेजर का काम है। आपका प्रोडक्शन ट्रैक करना है, यदि मैन्युफैक्चरिंग है। यदि सर्विस कंपनी है तो आपका ये ट्रैक करना है कि किसको किसने कॉल किया था, जिसने कॉल आया था, जिसका मेल आया था, उसको रिप्लाई पहुंचा है नहीं पहुंचा, उसको रिजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। यदि आप प्रोडक्ट सप्लायर हो तो आप ये कोशिश करोगे कि या तो फिर वेंडर की तरफ से आप डील करेंगे कि आप मटेरियल ऑर्डर करेंगे, मंगाएंगे, या फिर आप या तो सामने वाले को, आप जो जिसको आप सेल कर रहे हो, आप उसकी बात करेंगे। तो ये सारा दिन आप मॉर्निंग टू इवनिंग करते हैं। और यदि एक दिन के लिए भी आप बाहर चले गए, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई, और बहुत सारी डिलीवरी अफेक्टेड हो गई, बहुत सारे सर्विस टिकट्स रह गए, बहुत सारी चीज़ें पेमेंट्स फॉलो अप करना था वो रह गया। हम रिमाइंड नहीं कराते, कोई टीम काम नहीं करती है। तो ये बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर का बेसिकली काम है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप बेसिकली जरूर आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि ये आप कैसे रियली बिजनेस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, या एक स्मार्ट सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो भी आप हैं, और दूसरा क्या है, ये एक्सेप्टेंस है। ये बेसिकली सेल्फ एक्सेप्टेंस है। और यदि आप ये कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी जर्नी एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चलने लगेगी। डिफरेंट जो एक जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंज आ रहे हैं, उस रास्ते से हट के आप दूसरे रास्ते पे पहुंच जाएंगे। यहां से अब हमें ये पता चल गया यहाँ तक कि हम क्या गलती कर रहे थे। हम बिजनेस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, और दूसरा हम प्रॉब्लम से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी फोकस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लीकेजेस सिस्टम पे, टीम की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पा रही उस वजह से, क्योंकि हम ही बिजनेस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हो रही हैं। और जो भी हो रहा है, ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। whatever you are doing, whatever you are thinking, the way you are operating your business, the way you are managing, the way you are dealing with your team, the way you are training your team, the way you are recruiting the people,
This is all responsibility is taken care by you. Okay, and you are accountable for that. तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जो मैंने चीजें बताई, उसी तरह से आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो यदि मैं एक लाइन में बोलूं तो ये कहूंगा कि योर बिजनेस इज योर रिफ्लेक्शन। जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप बिहेव करते हैं, जिस हिसाब से आप टीम हायर कर रहे हैं, जिस हिसाब से टीम को ट्रेन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप कस्टमर ला रहे हैं, आपका जो कस्टमर का है, मोस्ट ऑफ बिजनेस ओनर, आई हैव बीन विटनेस ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस whom I'm working with, वो कस्टमर, आप गिड़गिड़ाते हैं कस्टमर के साथ, या आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप चेज करते हैं, बट कस्टमर आपके पकड़ में नहीं आता, बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग योर अथॉरिटी इन द मार्केट। आप अथॉरिटी सेट नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई से ये आपका रिफ्लेक्शन है सर। यदि आप रिक्वेस्ट करके, चेज करके कस्टमर को लेके आएंगे, तो फिर कस्टमर अपने हिसाब से काम चाहेगा, आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। जबकि आपकी और बेसिकली बिजनेस की ये मैच करना चाहिए, लेकिन मैच नहीं होती। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी समझना है। आप सिर्फ रिफ्लेक्शन अपने बिजनेस का, जो भी हो रहा है वो ऐसा क्यों, यू आर इन चार्ज ऑफ योर बिजनेस, ये आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। यदि नहीं लेंगे तो जैसा है वैसे ही चलेगा, यदि लेंगे तो आज से सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप कैसे लेंगे, कैसे चेंज करेंगे अपने आप को? देखिए, लाइफ में आपने भी सुना है, और यदि आप करके देखेंगे तो आज से ही बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। देखिए, स्मॉल स्मॉल हैबिट चेंज करिए। आप मिनी हैबिट्स को अपने आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं आज इस चीज को इस तरह से करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं थॉट प्रोसेस की, हम बात करते हैं अपने आप को चेंज करने की, अब बात करते हैं हम तरीका चेंज करने की, हम बात करते हैं बिजनेस वे ऑफ डूइंग बिजनेस की चेंज करने की, हम बात करते हैं आप कैसे आप अपने आप को बेसिकली डेलीगेशन करके फ्री कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं, तो आप वन बाय वन काम करिए। अब ये प्रॉब्लम ये आता है कि हम वन बाय वन क्या करें, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बस यहीं से मेरा काम आपके लिए शुरू होता है कि आप कैसे करें, क्या स्टार्ट करें। नाउ यू आर स्टेप अहेड टू शिफ्ट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर टू इफेक्टिव सीईओ। स्मार्ट सीईओ बनना है, यहां से एक पहला स्टेप शुरू होता है। जब आपने इस बात को रियलाइज किया और आपको समझ में आया कि रियली आप एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, और बिजनेस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, तो जैसा आप काम कर रहे हैं आपको वैसे मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर कैपेबिलिटी यू हैव, वट एवर माइंडसेट यू हैव, सेम जो आपके साथ पास है वही आप अप्लाई कर रहे हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, तो वही आपको मिल रहा है। अब आते हैं कि एक सीईओ क्या करता है, ये हमने पूरा डिस्कस किया इसके पहले भी, तो ये हमने अभी तक समझा। तो हमारा जो 5 फेजेस है, पहला फेज में हम यही काम करते हैं। सेकेंड फेज में जब जाते हैं तो मास्टर प्रोजेक्शन प्लानिंग पे आते हैं, मास्टर स्ट्रेटजी एंड एसओपी टू स्केल आते हैं, बिल्ड कंट्रोल सिस्टम, सीआरएम एंड ईआरपी आते हैं, एंड देन टास्क डेलीगेशन एंड टास्क अथॉरिटी समझते हैं। तो हम अब क्या करते हैं कि आज के वर्कशॉप में हम टास्क डेलीगेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप होगा उसमें आज हमने डिटेल में बिल्ड सीईओ माइंडसेट के बारे में बात किया, और हम अगले जो हमारा सेशन होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे मास्टर प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग की। उसके बाद मास्टर स्ट्रेटजी की, बिल्ड कंट्रोल, और हम जाके लाइन करेंगे डेलीगेशन में। तो डेलीगेशन हम आज के लिए रहने देते हैं, और हम
क्योंकि हम सीक्वेंस से चलेंगे तो ज्यादा हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. So because our purpose, objective of this workshop is to implement basically one by one things in our business. So whatever we have discussed, please start working, start implementing in your life. Set your goal, think like a CEO, and change your many habits. आप जो काम कर रहे हैं इसको आपको नहीं करना है, आपका काम नहीं है. बिजनेस मैनेजर आप नहीं हो, आप एक कंपनी के स्मार्ट सीईओ, आप एक स्मार्ट बिजनेस ओनर हो. सो इसी कमिटमेंट के साथ हम लोग ये जो हमारा दूसरा है, ये हम नेक्स्ट वर्कशॉप में हम स्टार्ट करेंगे. और इस वर्कशॉप को यहीं पर करते हैं. आप जरूर बताइएगा कमेंट में आपको ये सेशन कैसा लगा. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड like this video. Thank you so much for being with us, and thank you so much for watching and attending this workshop. Thank you so much. Wish you all the best.